डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं वी हाउ टू सॉल्व सम एमसीक्यू ऑन सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेनी टाइम दे आस्क एमसीक्यू ऑन सर्कुलर मोशन इन द एग्जामिनेशन लाइक द सीईटी, नीट और जे एग्जामिनेशन। और मुझे पता है दिस इज द टाइम फॉर स्टडी द सीईटी एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छे से लास्ट तक आपको देखना है, हर एक एमसीक्यू अच्छे से समझना है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ वी स्टार्ट एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। The ratio of angular speed of minute hand and hour hand. So very simple. What is the formula of angular speed? Remember, formula is very easy. That is omega equal to d theta divided by t. So where theta is the angular displacement, and as we know that for hour hand and minute hand, angular displacement is equal. That is 2 pi. It complete the one revolution. When it's complete the one revolution, that is angular displacement is 2 pi. So therefore we can conclude that so angular velocity is inversely proportional to only time. So therefore we taking the ratio of angular velocity for minute hand divided by angular velocity for hour hand. So now here that is the reciprocal. So according to that we can write that is t hours divided by that is minute. So what is the hour? A complete hour hand complete the one revolution, that is 12 hours. Convert in terms of second, 3600 second, and then 1 minute hand complete the one revolution, that is 3600 second. So 3600 second get cancelled. That is 12 as to 1 is the answer. So we get the C is the correct option of the given example. Such a question asked into the CT examination. So very simple है, अच्छे से देख लीजिए, take the screenshot, we go for the next. Next example. Wheels of a toy car rotates. Now there is a one toy car is given, having wheels are rotate about the fixed axis. So this is the fixed axis, down from 400 rps to 200 rps. Rps means revolution per second in 2 seconds. So then it's angular retardation. Remember, retardation means whenever we apply the brake, that acceleration, it is called retardation. And what is the RPS given? That is frequency of revolution is given. That is N1 is 400 RPS and N2 is that is 200 RPS. And we have to calculate the what we have to calculate? Angular acceleration. So it is denoted by the letter alpha equal to d omega divided by dt. D omega means that is final velocity minus initial angular velocity divided by time. So what is the final angular velocity? As we know that according to the formula, omega is equal to angular displacement upon time, that is 2 pi, and 1 upon time period, that is frequency. So now here that is 2 pi n2 minus 2 pi n1 divided by t. So is equal to, taking common 2 pi common into the bracket, n2 minus n1 divided by time. So that is 2 pi n2 minus n1. So what is the observation? So now here 400 to 200. So it becomes that is 400 minus 200, that is 200, taking the subtraction of revolution per second, and in which time, that is in 2 seconds. So divided by 2. So 2 get cancelled. So what is the remaining answer? That is 200 times pi radian per second square. So this is the correct answer of the given explanation. So option number first is the correct answer of the given example. बहुत ही simple example दिया था. रिमेंबर द फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ऑलवेज इस पे क्वेश्चन हमेशा रहता है सीईटी में, तो अच्छे से इसको कर लीजिए. वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. दैट इज द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with acceleration a. If its speed gets double, find the ratio of centripetal acceleration after and before. So what we have to calculate? बहुत ही simple solve करना है. हमें calculate करना है centripetal acceleration after divided by centripetal acceleration before. Or as we know that what is the formula of centripetal acceleration?
दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आफ्टर के लिए हमने 1 ले लिया, इसके लिए हमने 2 ले लिया। और सर्कुलर पाथ रेडियस तो सेम ही रहेगा, सो रेडियस रेडियस गेट कैंसल, सो व्हाट वी गेट दैट इज इक्वल टू सो द स्पीड गेट्स डबल, मतलब स्पीड बन रहा है डबल, सो दैट इज 2 टाइम्स v square divided by v square, so that is it get cancelled, so we get the answer 4:1। the question बहुत easy था, very simple, the option is D। उसका स्पीड आफ्टर का जो स्पीड है वो डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है मतलब इसका 2 टाइम्स v का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला स्पीड सेम रहेगा, इट बिकम्स गेट कैंसल, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4:1 इज द करेक्ट आंसर। वी गो फॉर द नेक्स्ट। Circular orbit of two satellites having radius r1 and r2, so we draw the earth, so this is the earth surface and this is the orbits of first satellite and second satellite having radius r1 और इसका radius है r2, ये satellite first और ये satellite second। what given, the satellite first having radius is less than satellite second, so if angular velocity of satellites are same, बहुत important दिया है उन्होंने, angular velocity of first satellite is equal to the angular velocity of second satellite, then their centripetal acceleration are related as, so बहुत ही simple question है, हमें पता होना चाहिए what is the formula of centripetal acceleration। remember there are the two formulas of centripetal acceleration, that is v square upon r और r omega square। so यहाँ से हमें फार्मूला सेलेक्ट करना है ये वाला। why we have to select this formula, because the angular speed of both satellite is given equal, so अगर वो इक्वल रहेगा तो डेफिनेटली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओनली किस पे डिपेंड रहेगा, दैट इज रेडियस, मींस ऑर्बिट रेडियस। सो हमें बस यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन करना है कि व्हाट इज गिवन, फर्स्ट जो सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट उसका radius come there as compared to second, so we can conclude that, so that is we can conclude r1 is less than r2, so therefore we can conclude centripetal acceleration of first satellite is less than the centripetal acceleration of second satellite। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, a particle is moving on circular track of radius is given with constant speed is given, then we have to calculate the acceleration। अगर पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व हो रहा है, सो डेफिनेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। and what is the formula of centripetal acceleration, as we know that the formula of centripetal acceleration that is v square upon r, और हमें स्पीड दिया है उन्होंने, कितना दिया है स्पीड, 6 मीटर पर सेकेंड, सो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस इज गिवन दैट इज 30 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर तो कितना बन जाएगा 0.3 मीटर। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करना है, 6 स्क्वायर दैट इज 36 and divided by 3 into 10⁻⁻1, so it becomes 36 divided by 3 कितना बन जाएगा 12, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा दैट इज 10⁻1, सो दोनों का प्रोडक्ट 120। हमें सॉल्व करना है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वी गेट द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन एग्जांपल। वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से कीजिए इनको, basic question है, always they ask into the examination। so what is given, AR and AT means represent radial and tangential accelerations, the motion of the particle may be circular, so if so there are the three observations are given। first of all what given, which type of motion is given, circular motion, तो आपको circular motion में पता होना चाहिए कि who is responsible for the circular motion of any particle, so remember that is centripetal acceleration, इसको हम और एक नेम है that is radial acceleration also। why, because it is act along the radius and towards the center, so radial acceleration is necessary for circular motion, और second one है tangential। so आपको पता होना चाहिए tangential acceleration zero कब रहेगा, so remember whenever it becomes zero whenever
whenever the motion is that is uniform circular motion. In uniform circular motion 80 0 रहेगा और radial component never 0 because that is responsible for circular motion. In case of non-uniform circular motion, what happen? AR also not equal to 0 and AT also not equal to 0. So ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना. सो हमें तीनों में से चेंज करना है. यहाँ पे दोनों जीरो दिए मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सेकेंड में क्या दिया उन्होंने? AR इज जीरो. ओके, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा. अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो AR कभी भी जीरो नहीं रहेगा, उसके वजह से ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट वाला सी ऑप्शन, AR नॉट इक्वल टू जीरो, यस, और AT जीरो, मतलब ये वाला केस बन गया. विच केस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So remember, most important point you have to remember regarding the USAM and non-USAM. In uniform circular motion, what happen? AT 0, AR not equal to 0. In non-USAM, both not equal to 0. अच्छे से याद रखना है, बहुत simple question था. Next, a body is moving on a circle of radius 80 meter with speed 20 meter per second. Velocity is given, which is decreasing at the rate of 5 meter per second square. That is, acceleration is given at an instant. The angle made by its acceleration with velocity is very simple. आपको पता होना चाहिए. So that is tan of, formula is very easy to remember, tan theta equal to AC divided by AT, where AC is the centripetal acceleration, AT is the tangential acceleration. What is the formula of AC? V square divided by R divided by AT. So it becomes V square divided by R into AT. So put the value. Velocity is given, that is 20 meter per second. 20 into 20 divided by radius is given 80 meter. बहुत ही easy question है. और tangential acceleration decreasing at the rate 5 meter per second 5. So इसको जल्दी solve करना है और tell me the answer. 2 2s are, that is 400, and it becomes 400 get cancel. Answer is 1. So if tan theta is equal to 1, so we can conclude that tan of 45 is equal to 1. So from here we can say that the value of theta is 45 degrees. So option first is the correct answer of the given example. Take the screenshot. We go for the next example. The particle is moving along the circular path, मतलब circular motion perform कर रहा है particle due to centripetal force. Definitely centripetal force is necessary for performing the circular motion. Constant magnitude, having a constant magnitude is an example of motion with. Very simple. So आपको पता होना चाहिए who is responsible for circular motion, that is centripetal acceleration. उसका direction रहेगा towards the center, and that is centripetal force, that is FC. So whenever the magnitude of centripetal force is constant, we can conclude that this is the UCM, means example of uniform circular motion. So we have to check which example is correct. First option is given constant speed and velocity. Second option variable speed and variable velocity. Third option variable speed and constant velocity. Next option constant speed and variable velocity. The option number D is the correct. So what happened? UCM means speed constant रहेगा, याद रखना है आपको, और velocity variable रहेगा. Why it is variable? Because at every point, so the direction of velocity is changes. So therefore it is variable. And also remember that uniform circular motion is accelerated motion. Next, the speed of particle moving in a circle is increasing, मतलब speed increase हो रहा है. So when it increases, definitely it is the example of non-uniform circular motion. So then the dot product of acceleration and velocity is
और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट, a particle move with a constant angular velocity in a circle during the motion, its energy is conserved, second momentum is conserved, third energy and momentum both are conserved, and last none of the above. So आपको याद रखना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन इज फर्स्ट, एनर्जी इज कंजर्व, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, so उसका एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल था, a car wheel passes through the convex breeze, so we draw the diagram of convex breeze. So this is the convex breeze, car is passing with velocity v, a force on its at the topmost point is equal to, so आपको अच्छे से डायग्राम रिमेंबर रखना है। दिस इज द कॉन्वेक्स ब्रिज, कार पास हो रहा है, हमें पता है उसका वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, उस पर जो भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो अवे फ्रॉम द सरफेस, और दैट इज परफॉर्मिंग मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर वो कॉन्वेक्स ब्रिज है सो डेफिनेटली ये सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ बनेगा सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। And what is the magnitude of centripetal acceleration? That is v square upon r, or which force act on that car? That is centripetal force. What is the magnitude of centripetal force? That is mv square upon r. So we have to apply the equilibrium of forces, so it becomes what we get. So now mg is greater than normal reaction, so therefore mg minus n, very simple, mg minus n इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और सर्कुलर पाथ है, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सो देयरफॉर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ n, सो वैल्यू ऑफ n इज दैट इज mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो आपको याद रखना, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जांपल, टेक द स्क्रीनशॉट। We go for the next example. A stone is tied to one of the end of the rope and rotate in circular motion. Basic question above. If the string suddenly breaks, so what happen in that case? So this is the center, ये आपका rope है, tied to the one end of the rope. This is the rope, यहाँ पे stone है, so इसको हम rotation perform कर रहे हैं। So question is given, if the rope is break, so what happen in that case? The stone is follow the tangential path. क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जब भी स्टोन ब्रेक होगा सो वो टेंजेंशियल पाथ में फॉरवर्ड जाएगा। सो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, it takes the turn if r1 and r2 be the reaction on the inner and outer wheel respectively. Okay, so r1 is the reaction on the inner wheel and r2 is the reaction on the outer wheel. So आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी r1 रिएक्शन रहेगा दैट इज इनर व्हील पे, जो भी रिएक्शन रहता है दैट इज लेस देन द आउटर व्हील। सो इसको ऑप्शन बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, circular curve of highway is designed for traffic moving at 72 km per hour. If the radius of the curve path is 100 meter, the correct angle of banking of the road should be. So very simple question, आपको पता होना चाहिए फार्मूला, that is tan of theta equal to v square divided by rg. So this is the formula of angle of banking. So speed is given how much, 72 किलोमीटर, उसको कन्वर्ट करना है स्पीड को
72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. सो 17 को 18 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 18 4 जा, that is 72 multiplied by 5, it becomes 5 4 जा 20 meter per second. So here we put that is 20 meter per second, that is 20 into 20 divided by r. R is given how much radius? 100 given, and acceleration due to gravity is 10. So we know that two zeros get cancelled. So what is remaining? That is 2 into 2 divided by 10. So 2 ones are 2, 2 5s are 10, that is 2 divided by 5. So what is the value of 10? That is tan inverse of 2 divided by 5. So question बहुत ही simple था, बहुत ही important है. Many times they ask the example on the basis of angle of banking. तो इसको अच्छे से करना है आपको. We go for the next example. Automobile enters the turn. टर्न आया मतलब सर्कुलर मोशन, उसका रेडियस r इज गिवन. बैंक एट एन एंगल 45 डिग्री दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1. then the minimum speed with which the automobile can negotiate the turn without skidding. So we have to remember the formula of minimum speed. What is the formula of minimum speed? So आपको you have to remember the three formulas. First formula, v equal to under root of r g tan of theta. Second formula you have to remember for maximum safe speed limit. So that is maximum safe speed limit, that is rg mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s into tan of theta. And remember the last formula, that is what is the minimum safe speed required. So यहाँ पे हमें minimum speed ही calculate करना है. So that is v minimum under root of r g into bracket tan theta minus mu s, that is 1 minus mu s into tan of theta. Remember what is the theta? Theta is the angle of banking, and mu s means that is coefficient of static friction. Coefficient of statics friction. So in example, angle of banking is given, that is 45. So what is the value of tan of 45? Tan 45 equal to 1. And most importantly, coefficient of friction is given, that is 1. So mu s is given also 1. So अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 minus 1 क्या बन जाएगा? 1 minus 1. So it becomes 0. Square root 0, that is 0. तो मिनिमम वेलोसिटी जो भी रहेगा एक केस में कितना रहेगा? 0 रहेगा. रिमेंबर. Next example. Next example, the body is moving on a vertical circle. बहुत important question है. Radius r such that the string is just taut at the highest point. The speed of the particle when the string is at the horizontal. So question is very easy. So particle is performing vertical circular motion, and we know that for vertical circular motion, so there are the three important position. One is the lowermost, second is the horizontal, we have to calculate the horizontal, and last one is the uppermost. So आपको याद रखना है, बहुत ही simple है. So यहाँ पे कितना velocity required है? That is 3rg. That much velocity is required for the circular motion. So option number is C is the correct answer. आपको और याद रखना है यहाँ पे कितना वेलोसिटी रिक्वायर्ड है? rg. और बॉटम पॉइंट पे रिक्वायर्ड है 5rg. इतना मिनिमम वेलोसिटी रहेगा, देन इट परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं करेगा. नेक्स्ट, assertion और रीजन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. When a car takes circular turn on horizontal road, then normal reaction on the inner wheels is always greater than. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर व्हील इज लेस देन आउटर व्हील. सो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकंड, दिस इज फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. यस, कार के रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनर व्हील का नॉर्मल रिएक्शन कम होना चाहिए एज कंपेयर टू आउटर व्हील. सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो व्हाट इज द ऑप्शन आउट ऑफ 4?
D. Assertion is incorrect, but reason is correct. Remember. Next example. Which of the following statement is correct? So read the all statement. First, centripetal force mv square upon r acts on the particle rotating in circle. Yes, correct है क्योंकि वही responsible है for circular motion. Second, if the particle is rotating in circle, then centrifugal force is acting. Yes, जब भी circular motion रहेगा तो centrifugal force भी act होगा. Next, on the particle in the radial outward direction. Yes, direction perfect दिया है उन्होंने. Centrifugal force is equal and opposite to the centripetal force. ये भी correct statement है. So इसका meaning है that is D is the correct option of the given example. Next, which of the following statement is correct? So मैं correct statement find out करना है. Very simple. First, when the water is bucket is while fast overhead, the water does not fall out of the top of the circular path, and the centripetal force in this position on water is more than weight of the water. Okay, so question is very easy. What is given into that example? We take the buckets. In these buckets, there is a water, and we just rotate that bucket continuously. So whenever we rotate that bucket continuously, what is the observation? The water performing the circular motion, and whenever it performing the circular motion, the centripetal force on the water is more than its weight. So आपको याद रखना है. Why it perform the circular motion? Because centripetal force का magnitude ज़्यादा होता है as compared to weight. उसकी वजह से water inside the bucket circular motion perform करेगा. So दोनों statement correct है. So option number C is the correct option of given example. We go for next. Point mass m is moved in vertical circle. Again, this is a question on vertical circle. Radius r with the help of the string. The velocity of the masses is under root 7 gr at the lowest point. आपको याद रखना है lowest point पे. The tension in the string at the lowest point is. NEET 2020 में question पूछा है. The question is based on the vertical circle. तो मैंने already separately lecture बनाया है vertical circle पे. वहाँ पे जाके आपको उसको अच्छे से समझ लेना है. Only 7 formulas you have to remember. अगर आपको 7 formulas पता रहेंगे so definitely you can solve any question on vertical circle. So अभी हम solve करते हैं. We draw the diagram. Very simple. हमें पता है what is the velocity at the lowest point? That is under root of 5rg. horizontal पे कितना होना चाहिए? That is under root of 3rg. और top point पे कितना होना चाहिए? That is under root of rg. क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? The velocity of the masses is under root of 7gr, definitely greater than 5gr. मतलब वो vertical circle perform करेगा. Next, at the lowest point पे दिया है the tension in the string calculate करना है. So हमें पता है tension in the string का formula T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. So that is T minus mg. यहाँ से एंगल मेजरमेंट होता है. सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज एंगल? थीटा इक्वल टू 0. So cos 0 equal to 1. So that is mv square upon r. So T equal to mg. It goes that side becomes positive plus m divided by r. What is the value of v square? Velocity is given. That is under root of 7gr. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 7gr. सो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का स्क्वायर पुट करना, दैट इज 7gr. सो r गेट कैंसल. सो व्हाट वी गेट? mg प्लस 7mg. सो एडिशन ऑफ दैट बिकम्स 8mg. क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था. व्हाट इज द ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन एग्जांपल. वी गो फॉर द नेक्स्ट. A block of mass 10 kg is given is contact against the inner wall of the hollow cylinder. Inner wall of the hollow cylinder drum of the radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1.
the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about an axis will be. Question बहुत easy है. We draw the top view of the cylinder. This is the top view of the cylinder and this is the front view of that cylinder. So हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू से. So क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, ये उसका रेडियस. नेक्स्ट यहाँ पे वो पार्टिकल है परफॉर्मिंग दैट मोशन, सो मोशन परफॉर्म कर रहा है. सो व्हाट हैपन इन दैट केस, सो इसका वेट जो भी रहेगा एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगा क्योंकि सरफेस इस साइड में है, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. और हमें पता है कि इनसाइड दैट नाउ इट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन. सो इफ इट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, so who is responsible, that is centripetal force. What is the magnitude of centripetal force? M r omega square. So according to the equilibrium of forces, so as we know that इसको स्लीप होना नहीं है, तो कब स्लीप नहीं होगा ये, अगर फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन mg रहेगा, तभी वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. वॉल ऑफ डेथ के वही एग्जाम्पल आपको याद रखना है. So frictional force हमें पता है. What is the magnitude of frictional force? Is directly proportional to normal reaction. So frictional force equal to mu into n. So that is coefficient of static friction and n for normal reaction. आपको नॉर्मल रिएक्शन रिगार्डिंग याद रखना है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहता है. सो ये वाला सरफेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली क्या रहेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स को हमें क्या पुट करना है, एम म्यू एस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड दैट सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर mg on both side. mm get cancel, we have to calculate the omega square, so it becomes that is g divided by mu s into r. So therefore what is the value of omega, under root of g divided by mu s into r. Substitute the value. What is the value of acceleration due to gravity, 10. Mu s is given, that is 0.1, and radius that is r is given. What is the radius of the drum, that is 1 meter is given, 1. So therefore under root of 10, ये 0.1 ऊपर जाएगा तो that is 10, 10 10 100, 100 का स्क्वायर रूट 10. So उसका एंगुलर स्पीड जो भी रहेगा कितना रहेगा, 10 रेडियन पर सेकेंड. So option is B is the correct option of the given example. Very simple question था, ask into the NEET 2019. अच्छे से करना है. We go for the next. Take the screenshot. A mass m is attached to thin wire. Now it is performing the vertical circle. Then wire is most likely to break when. So हमें पता होना चाहिए whenever it performing the vertical circular motion, what happen, tension in the string सबसे ज़्यादा रहेगा lowest point पे. कितना रहेगा, that is 6 mg. याद रखना है आपको नंबर, रिमेंबर 6 mg लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन रहेगा. द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट वायर कहाँ पे रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे टेंशन ज्यादा रहेगा. सो द ऑप्शन इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल. सिंपल क्वेश्चन था. Find the maximum radius of the circle so that block can complete the circular motion. So very simple. So diagram is given. This is the inclined surface. यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है. So ये कितने स्पीड से जाएगा कि ये कंप्लीट कर लेगा. तो हमें इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब वेरी सिंपल है. सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इसका हाइट कितना रहेगा, इनिशियली हाइट है 5 सेंटीमीटर इज गिवन, एंड अकॉर्डिंग टू हाइट विच एनर्जी possesses by that block, that is potential energy, and that potential energy is converted in terms of kinetic energy. So that is potential energy equal to kinetic energy. Question is बहुत सिंपल है, बहुत easy है. एट हाइट पे रहेगा, इसकी वजह से दैट ब्लॉक possesses potential energy, उसका हम जब भी छोड़ेंगे सो इट performing the motion. So it performing the motion means potential energy convert होगा kinetic energy में.
सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हमने लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh, and kinetic energy equal to half mv square. Question is very easy. On both side mass get cancel. हमें पता है for performing the circular motion, how much speed is required at the bottom, at the lower point how much speed is required, that is v equal to under root of 5gr. अगर इतना स्पीड रहेगा so definitely ये circular motion complete कर लेगा. So that is gh equal to half, so v square, what is the magnitude of v square? That is 5gr. So r is the radius, capital दिया है उन्होंने इसलिए हमने capital r लिया. So that is 5g into capital R. On both side again acceleration due to gravity value get cancelled. What is the value of R? R equal to 2 times h divided by 5. So this is the relation we got, and what is given, that is for the maximum radius of the circle, so that the block can complete the circular motion. How much height is given? That is 5 centimeter. So 2 into 5 divided by 5 get cancelled, that is 2 centimeter is the answer. मतलब वो जो भी सर्कल कंप्लीट करेगा उतना उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस रहेगा. क्वेश्चन इज बहुत सिंपल है, उसका ऑप्शन है सी. नेक्स्ट एग्जांपल, सेम सिमिलर डायग्राम है जो हमने प्रीवियसली देखा. अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड देन स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक from a height h. Again this is the height is given. यहाँ पे एक ब्लॉक है उसका height h is given as shown in the figure. Just complete the vertical circle of diameter AB equal to AD. Vertical circle complete करेगा, उसका diameter AB equal to D is given. The height h is equal to. So a similar question इसको वैसे ही solve करना है. That is potential energy equal to kinetic energy. So potential energy, that is mgh. Kinetic energy, what is the kinetic energy? Half mv square. So यहाँ से m get cancel हो. Velocity कितना required है at the bottom पे to complete the circular motion, that is under root of 5gr. So v का square कितना आएगा? That is gh equal to half, that is 5gr. On both side, that is acceleration due to gravity get cancel. What is the value of r? What is the value of h? So that is we have to calculate here. We have to calculate the height. So very simple. So h equal to, what is 5 divided by 2 into r, and as we know that the option is given in terms of d for diameter. What is the relationship between the radius and diameter? Radius is always diameter divided by 2. So यहाँ पे put करना है हमें, तो radius की value substitute करनी, that is diameter divided by 2. 2 2 से कितना बन जाएगा? 4. So इसका complete answer आएगा 5d divided by 4. So the option is D is the correct option of the given example. Similar था, very simple था. ये क्वेश्चन उन्होंने JPMR 2019 में पूछा था, ये नीट 2018 में आया. सेम क्वेश्चन सेम सिमिलरली ही सॉल्व किया हमने. नेक्स्ट, one end of the string length L is connected to particle of mass m and the other end is connected to the small peg on the smooth horizontal table. If the particle move in a circle with speed, then net force on the particle. Very simple. अगर हम we take the string performing the circular motion, string से particle को हमने tight किया और उसको movement कर रहे हैं. So what happen in that case? जो भी tension रहेगा, tension in the string provided the necessary centripetal force for the circular motion. तो ये केस में जो भी force रहेगा, जो भी force रहेगा, that is exactly equal to tension in the string रहेगा. तो question बहुत easy था. Next example, assertion and reason का example है. For looping a vertical loop of radius r, the minimum velocity at the lowest point should be, correct answer है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. जब भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 5gr. मतलब असर्शन करेक्ट दिया. अभी हम रीड करेंगे रीजन. इन दिस इवेंट द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0. नॉट. व्हाट हैपन इन दैट केस? व्हेनेवर इट्स परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
अगर लोएस्ट पे वेलोसिटी 5 g रहेगा तो हॉरिजॉन्टल पे कितना रहेगा 3 g, तो टॉप पॉइंट पे कितना रहेगा g, मतलब जीरो नहीं रहेगा, कितना रहेगा वहां पे √g। मतलब सेकेंड ऑप्शन जो भी दिया है दैट इज रॉन्ग। तो एसर्शन करेक्ट है, ओरिजन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट answer of the given example. We go for the next. What we have to calculate in this given figure, a is given 15 meter per second square, मतलब acceleration दिया है उन्होंने, represent the total acceleration of the particle moving in the clockwise direction if the circular radius is r 2.5 meter है, 2.5 meter at the given instant of time, the speed of the particle is, the question बहुत ही easy है, चलो अभी यहाँ पे आते हैं हम। So this is the radius r, angle making 30, acceleration. So this is the, and we know that what is the direction of centripetal acceleration, direction of centripetal acceleration towards the center। तो ये आपका बन जाएगा adjacent side, adjacent side बनेगा तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे a cos of 30 degree, a cos of 30 degree। and what we have to calculate, we have to calculate the speed of the particle। so हमें centripetal acceleration का magnitude पता होना चाहिए, कितना रहेगा centripetal acceleration, that is a cos of 30 degree। और centripetal acceleration का फार्मूला बहुत ही ईजी है, v square divided by r equal to a cos of 30। so what is the value of v square, v square equal to a r cos 30। what is the value of acceleration, given is 15, radius also given, कितना दिया रेडियस 2.5, और cos 30 तो हमें सबको पता है दैट इज √3/2। सो 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5 इंटू 2.5, और √3 का आंसर पता है 1.732। सो इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी आंसर बताना है, प्लीज कैलकुलेट वेरी फास्ट। 7.5 multiplied by 2.5 into 1.732, what is the answer, that is 5.7। अच्छे से जल्दी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, a car is negotiating the curve road, मतलब कर्वेचर पे कार, road is at the bank, angle is theta, angle of banking is given, coefficient of friction between the tire and the car is also, that is vs, the maximum safe speed हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, मैक्सिमम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड और v स्क्वायर इक्वल टू rg tan theta। so maximum safe speed is formula is, that is option number first is the correct formula for the given example। next, so next example again very easy, uniform circular disc, radius is given, so that is radius equal to 50 centimeter, मतलब 0.5 meter, then rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane passing through its center, it is subjected to the torque which produces the constant angular acceleration। so angular acceleration is given, that is 2 radian per second square, the net acceleration at the end of the two is approximately, time is given, that is 2 second पे कितना रहेगा। so बहुत ही simple है, what is the formula of angular acceleration, that is equal to omega divided by t, what is the angular velocity, angular acceleration multiplied by time, angular acceleration is given, that is 2, time is 2, 2 2s are, that is 4 radian per second। what is the formula of centripetal acceleration, so that is AC equal to r omega square, so r is given, that is 0.5 and omega square, what is the value of omega square, 4 square, that is 16, so that is 8 meter per second square। and next, what is the tangential acceleration, that is r alpha, so it is given 0.5 and angular acceleration is 2, 5 2s are 10, means 1.0 meter per second square। we have to calculate the net acceleration, formula remember, under root of AT square plus AC square, what is the value of 80, 1 square that is 1, 8 square that is 64, so complete आ जाएगा 65,
65 का जो भी आंसर आएगा नियर इक्वल टू 8 आएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एग्जांपल. Option D is the correct answer of the given example, that is 8. Take the screenshot. We go for the next. Very simple question again. What is the minimum velocity with which the body of mass M must be enter the vertical loop? अगर उसको वर्टिकल लूप में आना है तो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट पे कितना मेंटेन करना है? अंडर रूट ऑफ 5 g r. रिमेंबर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एग्जांपल. नेक्स्ट. The particle of mass 10 grams move along the circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of acceleration if the kinetic energy of the particle is equal to? Kinetic energy is given how much? So that is kinetic energy का फार्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया kinetic energy 8 into 10 raised to minus 4 जूल. So v स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? That is 2 times 8 into 10 raised to minus 4 divided by m. m कितना दिया है? 10 ग्राम. So that is 10 into 10 raised to minus 3. So यहाँ से 1 0 गेट कैंसिल और 2 भी गेट कैंसिल और 2 8 2 जा कितना बनेगा? 16 into 10 raised to minus 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है. सो सिंपल है. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन. तो आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन. सो जब भी इनिशियली वो स्टार्ट होगा उसका वेलोसिटी 0 रहेगा. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एस. सो दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए एस. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? That is v square divided by 2 times s. That is v square divided by 2 times. What is the second revolution? First revolution complete करेगा तो उसका angular displacement कितना रहेगा? 2 pi r. और second revolution complete करना है तो that is 2 plus 2, that is 4 pi r. So complete रहेगा उसका answer, that is 4 pi r. So put the value. What is the value? 16 into 10 raised to minus 2 divided by 2 4s are 8. We directly write down 8. What is the value of pi? 3.14. And then radius is given, 0.4 is given. So put the value, that is 6.4. इसको solve करना है और जल्दी आंसर बताना है. Question is very easy. So option D is the correct answer of the given example. We go for the next. Next example, a particle is moving in a curved path. Which of the following quantities may remains constant during its motion? Acceleration, velocity, magnitude. Okay, acceleration का change होगा, velocity भी changes होगा, लेकिन magnitude of acceleration same होगा. Direction change होगा, लेकिन magnitude same रहेगा. Next example, the ratio of angular speed similar to the first example. हमने already first example solve किया है. Speed of the second hand to the hover hand. So what is angular velocity? That is angular displacement upon time. Angular displacement दोनों का same रहेगा. So omega is inversely proportional upon t. So omega of that is second hand divided by omega of that is hover hand. So what is the second hand? So that is time period of hover divided by time period of second. So that is 12 into 3600 divided by 60. So 0 get cancel or it becomes, that is 60. 720 as to 1 is the correct explanation of the given example. B is the option. Simple question tha. Next example, a rotating wheels changes angular speed from 1800 rpm to 3000 rpm in 20 seconds. What is the angular acceleration? So बहुत ही simple है. So that is angular acceleration equal to d omega divided by dt. d omega means that is final angular velocity minus initial angular velocity divided by time. That is 2 pi n2 minus 2 pi n1 divided by t. So that is taking 2 pi common. So what is the value of n2? n2 is that is 3000 rpm divided by revolution per minute. उसको second में convert करना divided by 60. And n1 is that is 1800 rpm divided by 60 on divided by time. Time is given in 20 seconds. So इसको calculate करना है, बहुत ही simple है. That is 2 pi
इंटू ब्रैकेट -20. ओके, कितना आएगा? 0 0 गेट कैंसल. सो 30 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 5 मीन्स 50. और यहाँ पे 0 0 गेट कैंसल. So it becomes 18 by 6 3 that is 30. So it becomes, so what we get final answer, 2 pi 50 minus 30 that is 20 divided by 20. 20 get cancelled. 2 pi is the final answer, that is radian per second square. So option C is the correct answer. Next example. A car of mass is given, bank or road, radius is given 90 meter on a frictionless road. If the angle of banking is 45, then what is the speed? So formula बहुत simple है, v square equal to rg tan of theta. So that is v square equal to r is given 90, acceleration due to gravity 10, 10 45. What is the value of 10 45? 1. So taking the square root, what we get? 30 meter per second is the correct answer. बहुत ही simple example था. We go for the next. Okay, what is given? Car is moving circular horizontal track. उसका radius given है, that is 10 meter. Constant speed is given, that is 10 meter per second. Bob is suspended from the roof of the car by the light rigid rod length 10 meter. The angle made by the rod with the track is, so we have to calculate. बहुत ही simple है. Tan of theta equal to v square by rg. Speed is given how much? 10 square divided by radius is given, that is 10. Acceleration due to gravity again 10. So complete get cancel, it becomes 1. So tan of theta equal to 1. So it becomes tan of 45 degrees. So we can conclude that angle is 45 degree. So option number C is the correct answer of the given example. Thank you. अगर आपको कुछ डाउट है, सो डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट मी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs वी सॉल्व. सो इसको अच्छे से स्टडी करना है. और कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा सो आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.